Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you back after Eid vacations. Hope you enjoyed your Eid vacations and spend your Eid in a good way. Class 8, Subject Science, Unit number 4, Pollutants and their effects on environment, pages 52 to 54, and topics are acid rain and deforestation. Before starting, I will ask a few questions. What are the ill effects of global warming, and what is ozone layer, how it protects us from sun rays? Yes, ill effects of global warming are that it increases our Earth's atmosphere. Um, summer hot season is increasing day by day, and ozone layer protects us from ultraviolet harmful rays of sun. Yes, learning objectives. After completing this topic, you will be able to know which gases causes acid rain, how cutting of trees affects our environment, and what are the effects of these both processes on our environment. First of all, we will focus on the topic acid rain. What is acid rain? Acid rain is rain that is more acidic than normal. That is, its pH is different from normal rain. Acid rains spread and damages involves weather, chemistry, soil, and the life cycle of plants and animals on the land, and from acid rain in the water. Sulfur dioxide and nitrogen oxide, the major sources of acid rain. From your book, these are the pages in which acid rain is explained. Sulfur dioxide and oxides of nitrogen are present in the atmosphere as air pollutants. सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो पोल्यूटेंट्स के तौर पे होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कौन कौन से सोर्सेज हैं जो इन गैसेस को हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं. मैन मेड रिसोर्सेज ही हैं जो कि इन गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं. और जब रेन ड्रॉप होती है इन गैसेस के साथ, जब वो कंबाइन होती है तो वो एसिड फॉर्म करती है. SO2 के साथ कंबाइन होकर H2SO4 और CO2 या NO2 के साथ कंबाइन होकर HNO3 या H2CO3 बनाती है. All acid rain kills the aquatic life in rivers, lakes and ponds, etc. It destroys the leaves and barks of trees. It corrodes the metals and the stones used in buildings. यानी ये हमारी बिल्डिंग्स पे, हमारे एनिमल्स पे, हमारे प्लांट्स पे, हर चीज़ पे इफेक्ट करते हैं. ह्यूमन पे डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन इन चीज़ों पे इफेक्ट करके ह्यूमन बीइंग में इनडायरेक्टली ऐड हो जाते हैं. कॉजेज़ क्या हैं एसिड रेन की? बर्निंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस इन पावर स्टेशंस मेक इलेक्ट्रिसिटी गिविंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. Burning petrol and oil in vehicle engines give off nitrogen oxides as gases. These gases mix with water vapor and rainwater in the atmosphere, producing weak solution of sulfuric acid and nitric acid which fall as acid rain. यानी ये जो केमिकल्स हैं वो कंबाइन होते हैं रेन वाटर के साथ और वो एज अ एसिड रेन फॉल करते हैं. टाइप्स क्या हैं इसकी? वेट डेपोजिशन है और ड्राई डेपोजिशन है. वेट डेपोजिशन में क्या है? फॉग है, स्नो है, ठीक है. ये रिवर्स में, ग्राउंड में फ्लो करती है और प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट करती है. और ड्राई में क्या आ जाता है? एसिडिक गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं, ठीक है, और रेन के साथ फॉल बैक होते हैं पे ड्राई डेपोजिशन के ज़रिए, ठीक है, एयर के ज़रिए. या फिर अगर हम इफ़ेक्ट्स देखें तो इसका नॉन लिविंग थिंग्स पे भी इफ़ेक्ट है, लिविंग थिंग्स पे भी है, सॉइल पे भी है. नॉन लिविंग थिंग्स में आपको ये नज़र आ रहा है, ताजमहल नज़र आ रहा है, ठीक है. इसके अलावा ये डेड बॉडी नज़र आ रही है, ठीक है. तो ताजमहल जो है आगरा में है. सफरिंग फ्राम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अदर फ्यूम्स पोल्यूटेंट्स फ्राम रिफाइनरीज, ठीक है. और लिविंग में आ जाता है ह्यूमन की हेल्थ से, जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज़्यादा इसका इफेक्ट आ रहा है. सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस जो हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर रही हैं, ठीक है. और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग जो है वो कॉज कर रही हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, और परमानेंट लंग डैमेज कॉज कर रही हैं, ठीक है. और जो नॉन लिविंग में वो क्या है? एसिड रेन कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स, स्टैचूज, ब्रिजेस एट्सेट्रा, ठीक है. वाटर एनिमल्स पे किस तरह से है? एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ लेक्स एंड रिवर्स विच इज़ डायरेक्टली इफेक्ट ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम. आबी माहौल पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है क्योंकि ये लेक्स और रिवर्स की एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है.
हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि देखें इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, डोमेस्टिक फ्यूल है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, सब में से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, जो धुआं निकल रहा है, जो एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है, अपने केमिकल्स ऐड कर रहा है, वो केमिकल्स एसिड रेन का बायस बन रहे हैं। ट्रीज और सॉइल पे इसका कैसे इफेक्ट होता है? एसिड रेन डिजॉल्व ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड यूजफुल मिनरल्स फॉर द ट्री टू ग्रो, weakens the process of photosynthesis. According to modern research, acid rain leaches potassium, calcium, magnesium, etc. essential elements from the top of soil, and when soil is contaminated, cereal production drops. Acid activates aluminium from the soil, which leaches into water, and fish diet drinking water is contaminated. यानी ज़मीन पे और दरख्तों पे इस तरह से इसका इफेक्ट हो रहा है। अब सोल्यूशन क्या है? Fit scrubbers into factories, chimneys, which are chemical filters that remove impurities such as sulfur from smoke. स्क्रबर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ की चिमनीज़ में फ़िट किए जाएँ, जो कि एक फ़िल्टर का काम करते हैं, जो इन गैसेस को बाहर नहीं निकलने देंगे। कार्स कैन बी फिटेड विद स्पेशल कन्वर्टर्स विच रिमूव डेंजरस केमिकल्स। कन्वर्टर्स कार्स में लगाए जाएँ। गवर्नमेंट नीड टू spend more money on pollution control. Government need to invest in researching different ways to stop pollution. कंक्लूजन क्या है? एसिड रेन इज स्लोली डिस्ट्रॉइंग अवर प्लानट, ये हमारी ज़मीन को डिस्ट्रॉय कर रही है। इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट वी प्रोटेक्ट द अर्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन टू एंजॉय। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर अपनी अर्थ का बनाएं, ताकि जो नई जनरेशन है वो एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। एक आपको वीडियो भी शेयर किया ताकि मज़ीद एसिड रेन के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प हो। Mrs. Coco, what happened to these trees? It is not autumn, so why have their branches and leaves fallen? Bubbles, it's so sad to see our environment like this. But the truth is, humans do not take care of the environment. The damage to these trees was caused by acid rain. What? It's raining acid? Does that burn our skin as well? Calm down, Bubbles. Acid rain is harmful to the environment, but it isn't strong enough to burn our skin. Acid rain is any form of precipitation, like rain, snowfall, drizzle, or hail, that can become acidic due to atmospheric pollution. And this can result in harm to the environment. Let's take a closer look at the causes and effects of acid rain. Humans burn fossil fuels on a large scale to produce electricity and other industrial products. Fuel is also used in automobiles. Burning fossil fuels emits gases like sulfur dioxide and nitrogen oxides. These gases combine with water vapors, oxygen, and other chemicals in the atmosphere to form solutions of sulfuric acid and nitric acid. The wind can spread these gases across hundreds of miles, resulting in acid rain in more than one place. These acidic solutions fall onto the earth in the form of precipitation like rainfall, hail, or snowfall, thus creating acid rain. Mrs. Coco, acid rain does not only refer to rain, it also includes snowfall. You're right, Bubbles. Because it's called acid rain, people often think that it's the rain that is acidic. But acid rain can be in the form of snowfall or hail. Human activities are a major cause of acid rain, but sometimes acid rain can also be natural. Volcanoes also release some of the gases that cause acid rain. The environmental effects of acid rain are very harsh on plants, lakes, streams, and aquatic life. In crop fields, acid rain makes the soil acidic. This affects the growth of crops. Acid rain makes the water in streams and lakes acidic. When acid water flows through the soil, it washes aluminium from the soil into streams and lakes. This aluminium combination with the acid rain makes water toxic for fish and other aquatic animals. Overall, this disturbs the food chain.
since living things depend on one another for food. Acid rain also has effects on human health. Our lungs can be harmed by the oxides of sulfur and nitrogen, resulting in respiratory system disorders. Acid rain has a corrosive effect on marble buildings and sculptures. This is so sad. I used to love rain. There must be some way to stop acid rain. You're right, we can reduce it by reducing the release of the pollutants that are causing it. This means we need to burn less fossil fuels, as the smoke produced from them is the main cause of acid rain. We should use alternative ways to generate electricity that does not harm the environment. This includes wind turbines and solar panels. We could also walk or travel around on bicycles when possible to reduce emissions from our vehicles. But even if acid rain could be stopped today, it would take many years for the environment to reverse its harmful effects. That doesn't mean we should stop trying, though. Let's summarize what we have learned today. Acid rain is any form of precipitation that becomes acidic due to atmospheric pollution. Acid rain is caused when sulfur oxides and nitrogen oxides mix with water vapors, oxygen, and other chemicals in the atmosphere to produce sulfuric acid and nitric acid. Acid rain can cause harm to the environment, mainly to forests and lakes. It can affect the growth of plants and aquatic life. Acid rain can be reduced if we burn less fossil fuels and use alternative methods, such as generating electricity using wind turbines and solar panels, and riding bicycles where possible. जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के नाम से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि कटिंग ऑफ ट्रीज को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। फॉरेस्ट आर ओवर ग्रेट वेल्थ, दे ब्रिंग favorable changes in climate of an area, they stop storms and rains, they are source of many useful materials such as timber, firewood, resin, gums and medicine etc. यानी दरख्त हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, सॉइल एरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा इफेक्ट क्या है डिफॉरेस्टेशन के एनवायरनमेंट पे? हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इट चेंजेस द वेदर एंड क्लाइमेट, रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल, कटिंग ऑफ ट्रीज। अच्छा ये हमारे एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि हमारे टेम्परेचर को रेज कर देता है। रेट ऑफ एवोपरेशन इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है, विच रिजल्ट इन लेस रेन। बारिशों की कमी भी इसी वजह से होती है, दरख्तों के कटाव की वजह से। और वाइल्ड लाइफ पे क्या इसका इफेक्ट है? ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ एन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जिनको कल्टिवेट नहीं किया जाता, जिनको घरों में पाला नहीं जाता, वो वाइल्ड लाइफ कहलाती है, कुदरती तौर पे जो ग्रो किए हुए हैं। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इंक्रीज्ड व्हेन द नेचुरल बैलेंस मेंटेन्ड बाय वाइल्ड लाइफ इज डिस्टर्ब। और इन जानदारों की ज़िंदगी ख़तरे में है क्योंकि उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है ट्रीज़ की कटिंग से। स्टूडेंट्स, आपका ये आपका होमवर्क है जिसमें आपने वोकेबलरी वर्ड्स करने हैं, जिनमें सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, फिर एडवर्स, डिफॉरेस्टेशन, एरोजन एंड कंजम्पशन है। फिर आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। कटिंग ऑफ ट्रीज लेड टू डैश, डैश करोड्स द मेटल्स एंड स्टोन्स यूज्ड इन बिल्डिंग्स, द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल इन डैश, इन पाकिस्तान ओनली डैश % एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट। नीटली काम करना है और फ्राइडे तक मुझे सेंड करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।